9 o'clock. एक क्लास में नहीं दिखेगा, एक क्लास में भी नहीं दिखेगा। 9 AM कर दूं नेक्स्ट वीक से? हाँ, वो बच्चा सुबह उठ जाता है बेचारा बच्चा, 8 बजे सही में यहाँ पे होता है। किस किस को एक्चुअली में दिक्कत होगी, सच सच बताना, सुबह उठने में? फ्रेंड्स बता नहीं रहे हो लेकिन सोच बहुत रहे हो। चलो ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दिस चैप्टर आई वुड बी कंप्लीटिंग इट। 2 चैप्टर्स और रह गए इस एससीईआरटी सॉरी एनसीईआरटी के, और उसके बाद आई विल गिव अ ब्रेक। ओके, और पोर्टल में आपको थीम्स अपलोड होंगे फॉर योर टेस्ट। ओके, सो देयर विल बी अ थीम, उस पे आप लोग करना, मतलब उस पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी। कितना टाइम प्रिपेयर करना है आप लोगों को? मैं सोच रही हूँ 4 या 5 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगी टेस्ट। थोड़ा एक गैप दे रही हूँ मैं आप लोगों को, और उसके बाद अब यू पीपल आर कंफर्टेबल विद माय टीचिंग स्टाइल, बेसिक्स भी आप लोगों का डन हो गया है। तो अगर मैं कार्ल मार्क्स बोलूंगी या मैक्स वेबर बोलूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बारी सुना है। ओके, यू पीपल आर नाउ accustomed to all these concepts. ओके, सो इसलिए क्लासेस का थोड़ा टाइम बढ़ाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो मैं यही कर सकती हूँ, 9 to 11:30 कर देंगे टाइम, तो 2:30 में 2 आवर्स की आपकी क्लास, बाकी 15-15 मिनट्स का आपका टेस्ट रहता है, डेली टेस्ट रहेगा। और फिर आप देख लेना आप किस तरीके से इतना इम्प्रोवाइजेशन होगा ना आपके राइटिंग स्किल्स में, दैट वुड हेल्प यू इन योर जीएस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सैटरडे मेरा थोड़ा बिजी है, तो मैंने आपका टाइम नहीं दिया है, आपका नाम नहीं है, लेकिन आप कल नहीं, टुमारो इज व्हाट, थर्सडे, आप फ्राइडे में टाइम ले सकते हो, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। सैटरडे में मेरा सारा मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के साथ टाइम है इस बार। ओके, आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ले लो ना मेरे अंडर सिर्फ, अगर सिर्फ आपको राइटिंग का ही प्रॉब्लम है। बिकॉज जनवरी के बाद सेकेंड फेज में किसी का भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ दिसंबर तक के सेकेंड फेज में किसी का भी एडमिशन नहीं हो सकता है, बिकॉज मे में फिर आपका वो है, फिर वो 27-28 ही टारगेट होगा, नॉट फॉर 26। Okay, we are discussing this paragraph. We are going to understand social structure. So urbanism is a way of life for large segments of the population of modern phenomena. This line, before the modern era, trade, religion, warfare were some of the major factors decided the location and importance of cities. Cities that were located on major trade routes or had suitable harbors and ports. हाँ, ये कंप्लीट नहीं करा था, विलेज वाला भी नहीं किया था। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट है सोशल ऑर्डर। ओके,
ओके पहले तो एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंटर्स लिखेंगे जल्दी जल्दी. ओके, societies are divided into two sections, urban and rural sectors. So lives are very different there. Social, economical, political, social, cultural lives are very different over there. And also social order. And also social order is also different. Now, first of all, you should know about the concept of villages, because in paper 2 again it's very important for us. So what is village? So villages emerged as, according to M. N. Srinivas, okay? He has brought a fundamental shift in studying Indian society from the fieldwork point of view. Okay, earlier we were only discussing caste from the textual interpretation. You can write these points, okay? So M. N. Srinivas is the one who have brought a famous paradigm shift in studying Indian society. M. N. Srinivas इन्होंने बहुत पॉपुलर करा था विलेज स्टडीज को, एंड आर्ग्यूज के इंडिया को समझने के लिए फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है rather than textual interpretation. So we cannot only understand Indian society by interpreting textbooks. Okay, we need to see more than that. So how and which part we need to study? Field work has to be conducted according to M. N. Srinivas on villages, क्योंकि villages is symbolic to Indian civilizations and social system. ये सारा पॉइंट लिखेंगे. एम एन श्रीनिवास बहुत 10 मार्क के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें. सो एम एन श्रीनिवास इज आर्गुइंग कहाँ पे फोकस करना है. ओके, वी नीड टू फोकस हियर ऑन द विलेजेस फील्ड स्टडीज. तो विलेज स्टडीज किस विलेज कैसे इमर्ज हुई, यहाँ पे देखिए. विलेजेस इमर्ज लिखेंगे एज पार्ट ऑफ द मेजर चेंजेस in social structure brought about by the transition from nomadic ways of life, hunting and gathering, food and transient. जब agriculture हुआ, okay, did not involve moving from place to place. Social structure also changed. Investment in land, technological innovation. So in agriculture created the possibility of purchasing a surplus, something over and above what was needed for survival. इकोनॉमी चेंजेस हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. ओके, हंटर एंड गैदरर थे, नोमैडिक थे, कुछ भी चीज हमको एक्यूमुलेट नहीं करनी थी. एग्रीकल्चर हुए, ग्रैंडरीज ले आए, इजंट इट. ग्रैंडरीज आने के बाद क्या हो रहा है, अब हम स्टोर कर सकते हैं. सर्वाइवल से ज्यादा हम स्टोर कर रहे हैं, सेटलमेंट हो रहा है. सो विलेजेस इमर्ज्ड. ठीक है. Settled agriculture meant that wealth could be accumulated. यही सारा प्रॉब्लम है. इसी बुक में हमने पढ़ा था ना, सोशल चेंजेस से प्रॉब्लम किसको होंगे. वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग. इन टूडेज टाइम, if I'll make a law, if I'll make a changes in the law, and what can be the change in the law? That now only elite class, only rich class, if anyone who is having properties more than of, let's just say 100 crore, okay, properties, not movable property like land, they are going to, and then I'm making the bars. If someone has 1000 CR and then billion this and then, so they have to pay the taxes. Okay, and poor and middle classes,
their poor classes are exempted, or they have to pay minimum, or they do not have to pay, because since they would be coming from informal sector. Now the middle classes or the service classes, they have to pay the minimum. As for instance, if I am earning 50 lakhs per annum, it is not much amount, okay, for, yes, for having a decent healthy life in India. In a good colony, if you are having a house, okay, and even if you're nuclear family, okay, and you are sending, because school structure तो है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ओके, आपको भी उनको बाहर भेजने का हक है, बेटर एजुकेशन देने का हक है. तो आई थिंक एक हेल्दी लाइफ 50 lakhs अगर कोई अर्न कर पा रहा है, मुझे लगता है, ओके, इन अर्बन लाइफ, नॉट इन रूरल, इन अर्बन एरियाज, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, इसका मतलब है डिसेंट लाइफ दे सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि सेविंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. अभी तो क्या है, हैंड टू माउथ. तो अब मैंने क्या किया, इस क्लास का एक मिनिमम किया कि इतना आपको देना है. और अगर कोई लेट जैसे 30 लाख दे रहा है, उसका मैंने बोला कि लेट जैसे ओनली 10%, 3 lakhs और दिस lakhs, समथिंग लाइक दैट, एक बार्स बना दिया मैंने. अब मुझे बताओ, कोई अगर 33 lakhs है, 10 lakhs है, वो फ्री है, उसको टैक्स ही नहीं देना. Now use your common sense, which is not very common in us. Who will be the one, which class in stratification will be upset, or which class will be happier? Common question. हाँ, अरे क्लास बताओ ना मुझे. Which class will be upset and middle class will be upset. Lower middle will be happier, okay, and this and the poor will be happier कि कुछ अच्छा हो रहा है. And we are going to make sure that Ambanis and Adanis cannot invest anymore in any government projects. All the industrialists has to pay lot of taxes. So they have what you call chopper, everyone, right? For that every ride they have to pay lot of amount. On every ride they have to pay 1 lakh का tax, something like that. Utopian है, सोच रहे हैं. Okay, if you people are having 4 members, and let's now come into the politics and bureaucracy. If you once you people become an IS officers, okay, and your children would definitely going to have leverages and this and that, they cannot enter into politics. They can compete for UPSC but not in politics. And the politicians, children also, they will not, they cannot even remain in India. They have to live in Africa or in some other countries. Okay, if you are on the good post like home minister, prime minister, जैसे XYZ में, अब इसमें तो ऐसे बहुत सिनेरियो है, एक XYZ मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, फॉरेन, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हूँ मैं. अब मैं तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मेरी बड़ी वाह हो रही है कि मैंने ऐसे जवाब दे दिया यूएस में, यूएन में, लोग चुप हो गए हैं मेरे एक जवाब में, क्या टैलेंटेड हूँ मैं. फिर वो लेजर राइट भी दिखाते हैं उनकी आंखों से. मेरा बेटा क्या कर रहा है, यूएस सिटीजन है, डीलिंग चल रही है फॉरेन में, इंडिया और उसकी सब चल रही है. ओके, मैं ये लॉज ला रही हूँ, तो अब किसको और डिफिकल्टी हो गई इन लॉज से? अब तो मिनिस्टर्स को भी हो गई, ब्यूरोक्रेट्स को भी हो गई, राइट? आई एम मेकिंग द लॉज, सो हु आर गोइंग टू रेजिस्ट दिस? These people. Now changes are only not going to be appreciated, and specifically such laws who are
at the benefit. This is what sociology is teaching us. Okay? So we do have to think like that. Who are the one who is creating this structure? Who are the one who is creating this structure? They are the only one who are in the power. Who will then resist? Who is in the privileged position. Okay? So we can actually bring equality. It is not that difficult. Why? Because problem is accumulation. भाई आपके घर में 2 हाथी 3 हाथी हैं 4 5 मतलब यू नो आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ खाते खाते मोटे हो जाते हैं ना ये सारे या फिट कर लेंगे अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड सम पीपल एंड इट इज नॉट इवन विद दिस इंडस्ट्रिस्ट एनीवन आई मीन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा हो वो डाउन टू अर्थ हो you see people who are having wealth especially they're like you know I would say male and females वो सीधा बात ही नहीं कर पाती हैं yeah what oh yeah I don't know you know they talk like that they're Indians but they talk like that and I was like okay fine and I'm not saying I have some people in my family as well like that okay and the male वो गाड़ी उनसे आप कैसे हाँ अभी मैं लैंड क्रूजर से तो आ रहा हूँ अभी वो गाड़ी तो चल रही है मेरी फिर ऐसे करके बाल बनाएंगे फिर उनकी वॉच दिखी ठीक है व्हाट दे आर डूइंग दिस why they are doing this because the very first thing what they do in the morning I can't even wear that no human can wear that आप you are doing shit आपके मुंह से बदबू आ रही है आपके बाल ना बने तो आप इंसान ना लगो राइट आपको घमंड इतना है तो ये घमंड एरोगेंस क्यों आया है और हमने इस चीज को बड़ा नेचुरल कर दिया है यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट पीपल हु आर हैविंग विजडम मतलब अगर आपके हाथ में लेट जस्ट से बहुत ही छोटी सी एग्जांपल दे दूं लेट जस्ट से इफ आई एम हैविंग 2 एप्पल्स ओके और अगर मैंने एक एप्पल किसी को दे दिया ओके लेट ऑल्दो आई एम अगेंस्ट बेकिंग ये जो बेकरी होती है उसको आप कभी सपोर्ट मत करो बिकॉज दे आर प्रोफेशनल बट अगर आप ऐसे किसी को दे दो ना तो लोग सोचेंगे अरे वाह बल्कि ये नॉर्मल है राइट if you are helping somebody if you are good people are amazed but if you're killing people if you are exploiting people they are not amazed क्यों because we have created structure in this manner right मतलब अगर आपके अंदर एम्पैथी है सिंपैथी है तो people would say बेवकूफ है क्या कर क्यों रहा है ऐसा no one is going to respect your emotions why because modern societies are being selfish in nature because it is being constructed in that manner. When we were hunter and gatherers or we were nomads, we were only utilizing whatsoever we required. Okay, so we have shared. Now we have created that. In fact, there is one of the advertisement. I do not know the company name. तो वो बोलते हैं more is less, something like that. तो आपके पास जितना है वो कम है. Okay, I am not against living in a good colony, having good resources, good food. It's fine. We all should live decent life. But then there should be a point, checking point. आपके घर में 4 लोग हैं, लेकिन आपके पास 400 बंगलो हैं. Is it making sense? Not making sense at all. Not at all. बट ये नॉर्मल है क्यों क्योंकि हमने ये कंपटीशन कर दिया क्रिएट और हमने बोला है कि भाई फ्यूचर जनरेशन आप अपनी 2 जनरेशन नहीं देख सकते हो मतलब शायद एक नेक्स्ट जनरेशन देख लोगे लेकिन 2 जनरेशन नहीं देख सकते इतना जीते ही नहीं हो आप कहीं भी लेकिन आपको चाहिए सबके लिए व्हाई बिकॉज ग्रीड इज हियर नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ न्यू नॉर्म पीपल विल गो अगेंस्ट
with this. Although our religion is talking about this only ना, Indian philosophy गीता में तो यही सारी बातें लिखी हैं. सब मोह माया है, तुम्हारा कुछ नहीं है. जो तुमने खा लिया, जो तुमने पहन लिया, वो तुम्हारा, उसके अलावा कुछ और तुम्हारा नहीं है. इनफैक्ट दाना दाना जो हम खाते हैं उसमें हमारा नाम ही नहीं, हमें नहीं पता. Why are we not talking on these lines? Because it is being created. Because society, modern society needs competitive people. In fact, आप किसी कंपनी में काम करोगे, वो बोलेंगे वी आर अ बिग फैमिली, वी आर अ बिग फैमिली, और फिर आप ही को आपस में लड़वाएंगे. तो एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, दिस डायरेक्टर, co-founder, this that, okay, फिर बोलेंगे now let's fight. I to never fight. I will take it. No, she is best. No, he is best. Okay? Why? Because आपस में आप compete करोगे, फायदे किसी और को. Human humanity नहीं है. If you are facing a problem and if I am helping it, it is a big thing in society. इन्होंने ऐसी मदद कर दी, और अगर पैसों की मदद कर दी तो ये तो भगवान है. Okay? Please do understand that it is a belief actually which is helping us also to create an order. And this social order was always there, but it is changing. So in earlier times when we become settled in Neolithic, from Neolithic period onwards, then Indus Valley civilization, and then the Vedic and the later Vedic phase, till earlier Vedic phase, we have created a social order which was not at all stratified or unequal in nature. It was good. सनातन धर्म. ओके भाई, आप मुझे बताओ एनीथिंग, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, पता नहीं, और कुछ रिच नेम्स तो हमें पता भी नहीं है, जो एक्चुअली में जो रिच लोग हैं. ओके, उनके नेम भी नहीं पता है, वो सब वेस्ट में ही है, नॉट इवन इन इंडिया, लाइक इन हियर ईस्ट में है, यहाँ वहाँ. आर दे टेकिंग द वेल्थ? बट we all are giving our consent. It's okay to have that much of wealth because it is yours. You have earned it. But what had happened during French Revolution? During French Revolution, this aristocrat class got collapsed. Kyun? Why and how? Very easy question, Shivansh. Why and how? आदित्य, तुम बहुत सोच रहे हो, बताओ. अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन. सोशियोलॉजी में कोई हिस्ट्री नहीं मैं पूछ रही हूँ. 1789 लुइस 16 हैव डन दिस, नहीं. मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक सोशल ऑर्डर था. क्या था सोशल ऑर्डर? तुम बताओ. हाँ, तुम ऐसे कर रही हो, मुझे लगी मैं तुमसे नहीं पूछूंगी. अच्छा फिर ठीक है, ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट पूछूंगी. हाँ बताओ. तो ऑर्डर किया था, ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर किया था. किंग एंड क्लर्जी, पीपल एंड देन द मासेस. ओके, यही था ऑर्डर. तो यही था ना पॉलिटिकल ऑर्डर में, लोग, क्लर्जी, किंग एंड देन द कॉमनर्स. हाँ, किंग ले लो, क्लर्जी ले लो, एंड देन द कॉमनर्स वर नीचे ना. ऐसे ही था. ओके, और किंग की बातें मानी जा रही थी, किंग कंसर्न करता था क्लर्जी से. तो दीज पीपल, इवन द क्लर्जी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. यही सब था. तो ये ऑर्डर टूटा कैसे, कोलैप्स कैसे हुआ? सोशियोलॉजिकल आंसर देना. व्हेन, हाउ? तो उन्होंने सबसे पहले काम किया होगा, तंग आ गए. तो वो तंग, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई होगी? हाँ, सबसे पहले शुरुआत हुई जब उन्होंने क्वेश्चन किया अपनी एग्जिस्टेंस को. जब उन्होंने क्वेश्चन किया अपनी
degraded conditions को. And it is very important for all of us to know our present by questioning wheresoever you people are. It is very philosophical, but you people can learn a lot from French Revolution or any other revolution. When you start questioning your present time, when you start questioning the reasons of your sufferings, you will understand the reasons. So we are not middle class or lower middle class because we are having any issues with us. We are critical thinking beings. And if you people are giving us an opportunity, तो हम भी क्रिकेट टीम को मैनेज कर सकते हैं और चेयरपर्सन बन सकते हैं इंडिया की, चाहे हमने क्रिकेट खेला ना हो. Given us a chance, Sai and what's your name? Sarika, both of them can give tough time to any ladies sitting in parliament. Given a chance, अगर आप दोनों को चांस दिया जाए कि हम आपको ये टॉपिक पे अब आप पार्लियामेंट में जाके डिबेट कीजिए, तो आप क्या प्रियंका गांधी से डरेंगे? या आप वो एक और है ना, अब कंगना बन गई है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है. पहले से ये एक्ट्रेस बनती थी. ऑन विच क्वालिफिकेशन, on which conditions actors who are not actually putting a limitation, or I do not know, मुझे नहीं लगता कि इंडियन फिलोसफी का कुछ उन्होंने उद्धार किया है या क्रेडिट किया है, क्या किया है मुझे नहीं पता, राइट? और क्रिकेटर्स जो बैठ जाते हैं. बट लेट मी, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. आदित्य ही बन जाएगा फॉरेन मिनिस्टर आराम से, गिवन अ चांस. या फिर एक लॉ में लेके आऊं और मैं कहूंगी कि जितने एस्पिरेंट्स यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, एटलीस्ट क्लियर भी नहीं किया, लेकिन जो इंटरव्यू अपीयर्ड है, दे और एनी कॉम्पिटिशन, आईआईटी, आईआईएम, इतने सारे कॉम्पिटिशन है, एमबीएज, ओके, इंटरव्यू अपीयर्ड, नॉट क्लियर्ड, they are suitable or they can get into they can become counselors, MLAs and all that. किसको दिक्कत होगी? नेपोटिज्म हिल जाएगा पॉलिटिक्स में. फिर मैं कहाँ जाऊंगी? जेल नहीं, कब्रिस्तान. बेवकूफ. कब्रिस्तान, राइट? बट यही हमको समझना है, दैट द ऑर्डर विच वी आर क्रिएटिंग, it is being created by some powerful people, and that order got collapsed when we have started questioning, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कॉमनर्स ने किया. लेकिन इसमें एक पैटर्न समझो, जब नेपोलियन पावर में आया तो उसने क्या किया? उसने भी करप्शन किया. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जब तक प्लेटो की जो बात है वो नहीं सच होगी, या जो पुराना वाला टाइम है वो सच नहीं होगा, वर्ल्ड विल बी लाइक दिस ओनली, दैट फिलोसोफर्स शुड रूल. Social scientists, educationists, they should become and they should get into power structure. गौतम बुद्धा इसलिए तो बना ना, वो फिलोसोफर थे. But the time will be not same. आज का फिलोसोफर आपको यूपीएससी में क्लासेस देते हुए भी दिखेगा. आज का फिलोसोफर यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बनता हुआ भी दिखेगा, काम करता हुआ. आईपीएस, आईएएस, रेवेन्यू, ओके. यूट्यूबर भी हैं बहुत सारे. They all are philosophers. So in my opinion, philosophers are the one who bring progressive changes for a society. Now, to understand these social changes and to understand that how these social structures, which has been constructed by us only, why they become massive, we have to understand social order. अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब ये हुआ कब? जब आप क्वेश्चन करते हो. This is what Immanuel Kant is asking. Question.
डोंट एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन। और ये इजी नहीं है कनिष्क, ओके, इजी नहीं है, आपको बहुत ट्रेन करना होगा अपने माइंड को। इजी थोड़ी ना कि मैं सुबह 8 बजे क्लास लगाऊंगी और तुम आओगे टाइम में, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। 10 मिनट और लेट हो गए और हो सकता है यू विल गिव मी अ सरप्राइज कि तुम सबसे पहले बैठे होगे, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ आवर थिंकिंग। It's a pattern which makes us repeat questions, like, it's a pattern in our mind which lead us to do same mistake again and again. ठीक है, तो तुमको अपने एनवायरनमेंट को देखना है, वो एनवायरनमेंट को देखो, ऑब्जर्व करो, वो उसी की वजह से तुम लेट हो रहे हो, वो पैटर्न तोड़ना है, ठीक है? Okay, so what am I doing? I am explaining social order, and to explain that social order, I am making interconnection from the past, from the philosophy, from your life. This is what critical thinking is, and this is what the nature of IS officers or any bureaucrat should be or have. Okay, now let's understand quickly on this. M. and Srinivas have said this, and from here I have explained accumulation of the wealth, and just to accumulation of wealth, I have given you enough insight. Why? Because Karl Marx is arguing on this line only. Why to have concentration of wealth? It's a shameless thing that you are wearing, let's just say 200 CR का necklace only, और आप उस जगह उतर के आप अपने आप को महारानी समझ रही हैं, आप ऐसी जगह रह रही हैं जहां पे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। क्या इंडिया के रिच पीपल या ये जो पॉलिटिशियन है, क्या ये स्लम्स को गायब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इट्स वेरी पॉसिबल, पर करना नहीं चाहते हैं। Anyway, let's get into it. The more advanced division of labor also created the need for occupational specialization. All of these changes together shaped the emergence of village. Now, in economic and administrative terms, the distinction between rural and urban settlement is usually made, ये लिख लेना, on the basis of two major factors: population density and proportion of agriculture related economic activities. Contrary to appearances, size is not always decisive. It becomes difficult to separate large villages and small towns on the basis of population. The cities and towns have much higher density of population or the number of persons per unit area, such as square kilometer, although they are smaller in terms of absolute terms. ठीक है, तो टाउन या सिटी, उसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, because this is what even Emile Durkheim have explained, that the shift which we have seen, लिख दो यहाँ पे कहीं ब्रैकेट में, पॉपुलेशन डेंसिटी डालो इधर और फिर यहाँ पे पॉइंट्स लिखो. Emile Durkheim in his work Division of Labor argues that the shift from mechanical to organic solidarity is due to increasing population density. Is due to increasing population density. जितने लोग बढ़े जा रहे हैं उतने उनको सर्वाइव करने के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है, चीजें क्रिएट करनी है. So it is that this example. Okay. Now villages are also distinguished from towns and cities by their larger share of agricultural activities in their economic profile. In other words, village will have significant proportion of population engaged in agriculture linked occupation. बस ये लिख दो, villages में ज्यादातर लोग agriculture linked occupation से related होंगे. The distinction between a town and city is much more matter of administrative definition. A town and city are basically the same sort of settlement, differentiated by size. An urban agglomeration, a term used in censuses and official reports, refers to a city
along with surrounding suburban areas and satellite settlements. Metropolitan area includes more than one city or continuous urban settlement, many times the size of a single city. Given the directions in which modern society have developed, the process of urbanization has been experienced in most countries. This is the process by which a progressively larger proportions of the country's population lives in urban rather than rural areas. Most developed countries are now overwhelmingly urban. Urbanization is also the trend in developing countries. It may be faster or slower, but unless there are special reasons blocking, the process does seem occur in most contexts. Okay, so according to United Nations report, ये सब पढ़ लेना. What is urban areas and this and that. Okay. Now social orders पढ़ते हैं and social change पढ़ते हैं. So objective condition in villages being different, we can expect the nature of social order and social change to be different as well. Villages are small in size, usually permit more personalized relationship. ये highlight करो. One-to-one interaction is there. More intimate relationship is there. Now here, village structure traditional follows traditional patterns. यहाँ पे caste, religion, tradition practices strong होंगे. यहाँ पे we feeling ज्यादा होगी. For these reasons, unless there are special circumstances that make for an exception, change is slower to arrive in villages than in towns. Okay? So there are also the reason for this. A variety of factors ensure that subordinate sections of society have much less scope for expressing themselves in rural areas than the counterparts in cities. The lack of anonymity and distance in the village makes it difficult for people to descend because they can be easily identified and taught lessons by the dominant sections. Moreover, the relative power of the dominant section is much more because they control most avenues of employment and most resources of all kinds. So poor have to depend on the dominant section since there are no alternative sources of employment. देखो ये वाला point. Villages में employment नहीं है और वो easily identified हो जाएंगे, तो इसीलिए counter strategies अपनाते हैं oppressed class to have their survival in villages. अपनी खुद की language में लिखिए. Now, if we'll talk about the power dynamics, it is more solid in villages. So change in the sense of shifts in power are the slow and late to arrive in rural areas because the social order is stronger and more resilient. ये line underline कर लीजिएगा. इसीलिए गांव में आपको stagnant दिखता है, that nothing is changing. Another reason why change is slow because villages are scattered and not as well connected to the rest of the world as cities and towns. New modes of communication, particularly the telephone and the television, have changed this. अब एक थ्योरी आई है कल्चरल लैग बाय विलियम ऑगबन. लिखेंगे यूपीएससी डिड आस्क क्वेश्चन ऑन दिस. विलियम ऑगबन.
So William Ogburn is arguing that material changes is happening at faster rate than the beliefs. Okay, ये पूरी theory हम पढ़ेंगे. So the pace of change with respect to material culture is faster, but non-material changes is not very faster. And also is arguing कि जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें जो गांव के लोग होते हैं वो इसको जल्दी फास्ट वे में अडाप्ट नहीं कर पाते. So there is a cultural lag theory. Okay, we are going to read in detail within social changes chapter और टॉपिक 10. इसको सिंपल ये समझो कि टेक्नोलॉजिकल वाइज हम अभी अच्छा कर गए हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग फीमेल इन्फेटिसाइड, फ्यूटिसाइड्स, डाउरी, डेथ्स एक्सेट्रा. तो बिलीव्स में अभी तक हम लैगिंग कर रहे हैं. या डिजिटल डिवाइड, ओके, बिटवीन अर्बन एंड रूरल. सो देयर इज नॉट अ बैलेंस और सिंकिंग. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल लैग थ्योरी फॉर अस. So the agrarian social relation have a very major impact on rural societies. Thus, measures like land reforms which alter the structure of land ownership have an immediate impact. In India, the first phase of land reforms after independence took away proprietary rights from absentee landlords. Okay, so ये changes आप देखेंगे. Okay, so in many regional contexts, the dominant caste, हाँ, topic लिखेंगे dominant caste, who has given a concept by M.N. Srinivas. Dominant caste कि कैसे अब जो कास्ट सिस्टम है मॉडर्न डेज में इज फंक्शनिंग इन अ डिफरेंट मैनर. सो यू मे नॉट बिलोंग टू हायर कास्ट, बट आप किसी विलेज में यादव है और आपका वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, आप तो आप वहां पे सुपीरियर माने जाएंगे. तो डोमिनेंट कास्ट ये अभी हम पढ़ेंगे. तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंजेस. इनफैक्ट M.N. Srinivas, when he was explaining and arguing to the fact created by West that India is static and not changing, he has given the explanation and proves that how India is changing to the concept of Sanskritization and dominant caste. That caste is not static, caste is changing. Today you can be Dalit, but if you are today, in fact, Dalit has more power. You cannot call Dalit with their caste name. Okay, so they are powerful nowadays. So इसमें caste dynamics is changing. तो caste एक structure है, order create किया हुआ है इसमें, but यहाँ पे changes हैं. Okay, write down this example quickly. So changes is always there. In technological organization also we have changes. You have brought the changes, and why it is problematic whensoever there is a sudden fluctuation. You can see when there are sudden changes or fluctuation, the way the order was there, you will see an impact farmer suicide. So sudden fluctuation in agricultural prices, droughts or floods can cause havoc in rural society. The recent spate of farmer suicides in India, on the other hand, large-scale development programs aimed at the rural poor can also have an enormous impact. A good example is now Manrega, National Rural Employment, and this and that. Okay. It is well known that the city itself is very old. Even ancient society has, we did have this point, but यहाँ पे हम देखेंगे location. So urbanism as a way of life for larger segments of the population is a modern phenomena. So, but the modern era, trade, religion, and warfare were some of the major factors that decided the location and importance of cities. Cities that were located on major trade routes or had suitable harbors and ports. Okay. Here, natural advantage, so did cities that were well located from the point of view of military strategy.
Finally, religious places attracted large number of pilgrims and thus supported an urban economy. In India too, we have examples of such old state cities, Tezpur, Assam, and this and that. So changes ऐसे भी आते हैं, okay? Ajmer, Varanasi, Madurai in Tamil Nadu. So sociologists have pointed out city and life and modernity go very well together. Little bit. यहाँ पे एक्चुअली ये कंपैरिजन बना रहे हैं, आपको इतना डीप नहीं जाना बिटवीन विलेज एंड सिटी. What you have to just learn in this paragraph that in city you people are going to get lot of opportunities so that you can prepare yourself, you can have your own identity, but definitely isolation will be there. And those who are living in cities, they are the victim of endless desires. लिखेंगे ये most of them. Never ending gratifications. In city life, never ending gratification is there. And this is a point where Karl Marx and Immanuel Durkheim is coming on the same pitch. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई है आप लोगों को एडवांस में, जब आप कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम को कंपेयर करेंगे आपको बहुत हेल्प करेगा, because now UPSC is framing question on these lines only. They are giving you 3 thinkers, 2 thinkers and asking question. Earlier it was theoretical based, concept based, 1 thinker on 1 concept. Now they are giving you 3-4 thinkers together. Okay? तो अब तो आप चाहो भी ना रट्टाफिकेशन करना कि एक थ्योरी पढ़ लिया लिख लिया, सोशियोलॉजी में तो पॉसिबल ही नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है. नॉट इवन 1 क्वेश्चन यू कैन राइट आफ्टर जस्ट मेकिंग ready-made model answers. If you people are habitual of making model answers, okay, and then learning, no points. Now you will have to make less points, less notes, like yes, till topic 1 to 4 exclusive notes. Okay, some portion that I will tell. उसके बाद all you have to be critical. अगर आपको एक्सप्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आप लिख ही नहीं पाओगे. अब आप सोशियोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन and most of the optionals, even history nowadays, they all are actually the questions which I see, it's almost same, critical in nature. Okay, so please focus here. So luxury of, you can say, most people who live in cities have only limited and relative freedoms within the larger constraints. These are the familiar economic and social constraints imposed by membership in social groups. Okay, so the city to foster the development of group identities based on factors like race, religion, ethnicity, and so on. Okay, so most of the important issues and problems of social order in towns and cities are related to the question of space. High population density places a great premium on space and creates very complex problems of logistics. देखो ये सब आपका सोशल GS पेपर 1 का पार्ट है.
It is the primary task of the urban social order to ensure the spatial viability of the city. This means the organization and management of things like housing, residential pattern, mass transit system for transporting large number of workers and to fro for work, coexistence of residential and public industrial land, and finally the public health sanitations. तो ये सारे अर्बन सिटीज के प्रॉब्लम है. होमलेसनेस, स्ट्रीट पीपल, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस में रहते हैं, emergence of slums, congested crowd, okay, dadas who impose the authority, control over slum territory. कई बार स्लम के ऊपर क्वेश्चन आया है 2020 मार्क्स का, होमलेसनेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. It would all come in your paper 2. Now this is very important, ghettoization. Do you know that most of the Muslims I also know, they are living in a ghettoized place. Why? Just because all the Muslims are living there. Because they are very fearful because of communal tension, particularly after 2002 riots. Okay? Now I believe that you people can read the rest of the topics. Housing patterns linked to the economy of the city in crucial ways. Okay? The form and the content of social change in urban areas is also less understood in relation to the central question of space. Now, I do not think so that there is anything left in this particular chapter that I have to explain. You people can read it on your own. Okay? Rest of the top chapters, please read it out, and then if in case you will have doubt, let me know. What is the next chapter? And then so environment and society I would be now completing. Western sociologies are important, so today I will not start. Okay? You people can take break if you want. Then afterwards I will start environment society. Ghettoization, देखो क्या है? Ghettoization is a, you can say it's a way of settlement where people are living in one particular area for some reason. वहां पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम होगा, स्पेस कम होगा, फैसिलिटीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहीं पे रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू एन एग्जाम्पल दैट मुस्लिम्स इन जामिया नगर area, and there are lot many Muslim areas in Delhi, they can live at other place, like they can live, they can afford, but they're not going from there. बहुत ही congested lanes हैं, but they are not living, क्योंकि उनको लगता है this is our people living together. कभी rights वगैरह होंगे तो हम बच जाएंगे. For example, I have personally seen, because I am still living over there, okay, and collected data when I was doing my research. So during this protest, this citizenship wala protest mein, I have seen there people, all the males and females were inside, and the males, they were क्योंकि वहाँ पे बहुत rumors हो गया था कि communal लोग आ रहे हैं मारने के लिए, this and that, and then people had all the knives and salwars and all that and guns in their hands, okay, while protesting also. It is so true. I have witnessed from my own eyes. So people are living over there because they are feeling secure. So condition is not really good. You can live in gated community, you can live in communities
गुड पॉश कॉलोनीज, इतना पैसा है उनके पास, मर्सिडीज मर्स पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी आई हैव सीन उनके गैराज में खड़ी रहती है, निकालने वक्त प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे आर लिविंग ओवर देयर. So this is a ghettoization, okay? You can read Lewis' work on ghettoization. Ghettoization is a common problem in urban areas. So you will find one rich locality and nearby ghettoized colony. Okay? Okay, let's just take a quick break and then we'll study next chapter, environment and sociology वही पढ़ेंगे. Okay? उसके बाद Western sociologist and Indian sociologist. Okay, Western sociologist and Indian sociologist, I would be explaining in a deeper manner, not exactly from your NCERTs. Indian sociologist I may, but Western sociologist में थोड़ा deep पढ़ाना है. तो आ गया ना, 5th chapter है टॉपिक.